Hello children, we will take up a few problems based on torque. तुम्हारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है, बेस्ट प्रॉब्लम. All the concepts are involved in this. Just I will tell you what are the concepts involved in this question. Question is this. ये एक cylinder है, right? And this is kept on the surface. And this is the another elevated surface. इस पर एक फोर्स लगाना है F, so that minimum force required to pull this cylinder on this surface, right? Suppose इसको हम बोल देते हैं A, B, C and D. From AB surface, it is to be pulled on the surface CD. Let this point be M. In this condition, concept of समझो इससे बहुत से concepts involved इसमें. In this condition, when the cylinder is kept, it is touching this corner, and इसका जो weight है वो W है. So in equilibrium state आप क्या देखेंगे कि weight of the object is getting balanced by normal reaction over here. ठीक है, अच्छी बात. इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और जैसे ही हमने इसको पुल करना शुरू किया, एक फोर्स लगाया F फोर्स लगाया. जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, इट विल हिट दिस कॉर्नर के ऊपर ये पुश करेगा इसको. दिस विल बी द एक्शन बाय द सिलेंडर एट दिस कॉर्नर. कंसेप्ट को समझो. जैसे ही इस पर हिट करेगा, इसको पुश करेगा, सो रिएक्शन फोर्स विल कम ऑन दिस सिलेंडर. रिएक्शन फोर्स जब आएगा, पुलिंग करेंगे तो इट विल ट्राई टू लिफ्ट, राइट. रिएक्शन अब भी एक्ट कर रहा है, लेकिन एक रिएक्शन इधर से भी आ जाएगा, एंड उसका डायरेक्शन विल बी इन सच ए वे. इसका नॉर्मल रिएक्शन होता है तो ये दिस टेंजेंट आई विल ड्रॉ. इस पर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल सर्कल. इस रिएक्शन को सपोज हम ये बोल देते हैं N बोल देते हैं. नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दिस कॉर्नर विल पास थ्रू द सेंटर. क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री जो रहता है, इट पासेस थ्रू द सेंटर. सिंपल ज्योमेट्री चिल्ड्रन. ठीक है, अच्छी बात है. अब जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे, इट विल ट्राई टू लिफ्ट इट. एक सिचुएशन आएगा कि ये सिलेंडर यहां इस सरफेस को टच नहीं करेगा. एट दैट मोमेंट मिनिमम फोर्स यहां पर टच नहीं करेगा, मीन्स एट दैट टाइम रिएक्शन ड्यू टू दिस सरफेस विल बी 0. रिएक्शन ड्यू टू दिस विल बी N, एंड दिस फोर्स F विल बी एक्टिव. ठीक है, दैट विल बी द मिनिमम फोर्स. उससे जरा भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इट विल कम ऑन दिस सरफेस. सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड वी हैव टू फाइंड. चलो हम वो केस कंसीडर करते हैं, वो सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि दिस इज जस्ट लीविंग द सरफेस. जैसे ही सरफेस को छोड़कर वो कंडीशन हम इमेजिन करते हैं. उसमें रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, वेट विल बी एक्टिंग, एंड दिस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. एंड हम कंसीडर करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया. ठीक है, अच्छी बात. अब इक्विलिब्रियम स्टेट में मिनिमम फोर्स निकालना है, तो इट मींस इसके अबाउट हम कैसा सिचुएशन देख रहे हैं कि दिस इज टर्निंग. इसके अबाउट एक टर्न हो रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शन, इस पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है. इट विल नॉट स्लिप, बट इट विल मेक दिस सिलेंडर टू कम ऑन दिस सरफेस. तो ऐसे टर्निंग इफेक्ट देगा, यहां पर ऐसे टर्निंग इफेक्ट देगा, सो दैट इट विल कम ऑन दिस. एंड वेयर एवर देयर इज टर्निंग, देयर इज टॉर्क. ठीक है, अच्छी बात है. अगर हम टॉर्क देखते हैं अबाउट दिस पॉइंट,
so equilibrium state में this torque will be equal to 0. कंसेप्ट समझने की जरूरत है. Summation of torque about this torque due to all the forces acting on this cylinder about this point torque निकालेंगे तो that must be equal to 0. अब इसको ध्यान से देखा जाए. सो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इस कंडीशन में? नॉर्मल रिएक्शन, वेट एक्टिंग डाउन एंड दिस फोर्स. ठीक है. रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज आर. ये आर दिया है. सो 3 फोर्सेस जो है अबाउट पॉइंट सी हम निकालेंगे. आई विल से टॉर्क about the corner point C. इसके अबाउट मोमेंट निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं. Since the normal reaction is passing through this point, the torque of normal about this point will be 0. अब ये 2 पॉइंट बच जाते हैं, 2 फोर्सेस F and V. This force tries to give clockwise torque and W, that is weight, gives anti-clockwise torque. Right? So anti-clockwise taken as positive, हम इसको पॉजिटिव बोल देते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोल देते हैं. ठीक है. टॉर्क ड्यू टू दिस वेट निकालने के लिए सपोज दिस इज P and this is Q. तो हम क्या बोलेंगे? W into perpendicular distance this, so W into CP, perpendicular distance, this weight and this perpendicular distance from the point CP. This is positive minus F into CQ, F into CQ, that is equal to 0 according to this. अब निकाल लेते हैं CP. व्हाट इज CP? CP क्या होगा? दिस इज R, दिस इज H, दिस विल ऑल्सो बी H. सो दिस पार्ट इज OP. OP इज, हम लिखेंगे यहां OP इज इक्वल टू R माइनस H. That is equal to CQ. CQ वही है, OP है, that is R minus. So ये R minus H हो जाएगा. This is R. So we will write OC square is equal to OP square plus CP square. ठीक है. Therefore CP square निकाल लेते हैं. That is equal to OC square minus OP square. And OC is R, that is R square minus R minus H. कंसेप्ट समझने की जरूरत है. ठीक है. All the concepts are explained to you. So if you simplify this, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो R square minus this is R square minus 2RH plus H square. ठीक है. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो R square minus R square plus 2RH minus H square. So this R square and R square will go. We will get, इसमें से H कॉमन निकाल लो. So that is 2R minus H. Therefore CP is equal to under root H 2R minus H. ये आ गया CP. And CQ, this we know R minus H. So put the values. Therefore W into CP is this under root H 2R minus H. This is 2R minus H minus F into R minus H, that is equal to 0. And from this we will get
F is equal to W into H 2R minus H upon R minus H. So this is the minimum force required to pull this cylinder on this surface CD. Because we have considered that case when this just leaving this surface and reaction force is 0 on this, and it will turn and it will come on. This is the minimum. If the F force applied is more than this, it will definitely come on the surface CD. Very interesting question. Concepts are involved. So I think you have understood this clearly. Another beautiful question related to torque. See, in this question, this is a rod. OA is a rod. यहाँ पर hinge किया है. At the point O, it is hinged, so it can move like this. But it is tied by a string and fixed over at the point B. So situation is like this. It is in equilibrium, right? In this equilibrium condition, in this static equilibrium condition, so we have to find the reaction force by this hinge and the tension in the string. It is center of mass of the rod O. It is center of mass at this point, and whole weight of this will be acting from the center of mass, that is mg. So since it is in static equilibrium, so condition of this sigma F should be equal to 0 and sigma tau must be equal to 0. This is the condition for static or dynamic equilibrium. This is the equilibrium condition. So just we will look at. पहला क्या करते हैं? We will take moment about this point O, right? Moment or torque, moment about O. That is sigma tau. Forces कौन-कौन से? This T will try to give anti-clockwise rotation about this point to the rod, and mg will try to give clockwise rotation to the rod about this point O. And since I am taking moment about this point, so torque due to this reaction force will be 0. Condition is getting satisfied. So देख लेते हैं. If the length of the rod is this, so this is a half length. So the center of mass, so this will be L by 2. We have to find perpendicular distance from O to this, ये 90 degree. We have to find O, suppose we take C, OC. OC we have to find. This angle given 30 degree. So if you look at L sin 30 will be OC. Here OC is equal to what? Since it is right angle triangle, OAC is a right angle triangle. So OC upon OA is equal to sin 30. So OC will be OA sin 30 degree, that is L sin 30 degree. This is OC. This is known, right? So if we find sigma torque, sigma tau is equal to 0. So we will write, this is anti-clockwise. So T into OC minus mg into L by 2 is equal to 0. Right? Of course it is small m, mg. Right? Therefore T into L sin 30 minus mg into L by 2 is equal to 0. Therefore T into
L by 2 is equal to mg into L by 2. So L by 2 and L by 2 will go. Therefore, tension is equal to mg. And what is m? Mass is 10 kg. Therefore, P is equal to 10 into 10. Therefore, it is equal to 100 Newton. Tension in the spring is 100 Newton. Tension is known now. This is 100 Newton. Okay. Now we have to find the reaction. Reaction due to this hinge. So we have considered this is R and let this angle be theta. So component of this will be R cos theta, and in this direction it is R sin theta. And component of this tension along this will be what? T sin 30 degree, and along this, that is T cos 30 degree. They are the components, right? So just we will make sigma F should be equal to 0. It is in static equilibrium. Therefore, ध्यान से देखो, x axis के along, this is x axis, this is y. X के direction में forces कौन कौन से? This direction is taken as positive, then opposite direction will be taken as negative. So R cos theta, right? R cos theta minus here T cos 30 degree. Okay? T cos 30 degree, that is equal to 0. This relation we got. Therefore, R cos theta is equal to T cos 30 degree. It is first relation we got. Second relation, forces on y axis, that is R sin theta plus T sin 30 degree. That is R sin theta plus T sin 30 degree, that is equal to mg. And from these two, we will find reaction force R. Therefore, R sin theta is equal to mg minus T sin 30 degree. So mass is 10, G is 10, minus T is 100, into sin 30 is 1 by 2. So this is 50 times, that is 100, minus 50, that is equal to 50. R sin theta is 50, and here R cos theta is equal to, how much it is? That is 100 into root 3 by 2. That is equal to 50 root 3. These two things are known to us. Okay. From 1, this is 1 and this is 2. From 1 and 2. From these two equations, we can find the value of R. How will we get? Squaring and adding. If you square this, R square cos square theta, then R square sin square theta. If you are adding, you will be getting R square on left hand side. That is R square cos square theta plus sin square theta is equal to, squaring this, 50 root 3 square plus 50 square. So this we will get R square is equal to 50 square, you can take like this, common, and bracket root 3 square is 3, and you will be left with 1, that is 50 square into 4. Therefore R is equal to under root 50 square into 4,
Therefore, R is equal to 50 into 2, that is 100 Newton. So this way we have got the reaction force due to hinge on this setup, that is tension is 100 Newton and the reaction force is also 100 Newton. This way we have solved these two problems, good problems using the concept, and we will go for the next bit in the next video. Till then, all the best.